பெரிதாக கருதுவார்களா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் நாட்டை காட்டிலும் மதத்தை பெரிதாக கருதுவார்களே ஆனால் இந்தியா இரண்டாவது முறையாக மீள முடியாத சிக்கலில் சிக்கி சீரழியும் என்று எச்சரித்தார். அந்த எச்சரிக்கையை இந்த 75 ஆண்டு கால அனுபவங்களில் கடந்த 9 ஆண்டு காலம் ஏற்பட்டிருக்கிற அனுபவம் என்பது துயரம் நிறைந்ததாகும். மதிப்புமிக்க உயிர்கள் பலவற்றை கொடுத்து பெற்ற விடுதலை இன்றைக்கு கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டு விட்டது. நாடு என்பது வெறும் வகுப்பறைகளில் தொங்குகிற மேப்பில் இல்லை, நாட்டு மக்கள் தான். 120 கோடி மக்களின் ஒட்டுமொத்த நலனை பிரதிபலிக்க வேண்டும். 140 கோடி மக்களின் நலனை பிரதிபலிப்பதுதான் தேசத்தின் நலனை பிரதிபலிப்பதாகும். எனவே தேச நலன் என்பது வெறும் எல்லை கோடுகளில் இல்லை, மரம் அட்டைகளில் இல்லை, தார் ரோடுகளில் இல்லை. தேசம் என்பது மக்கள் தான். மக்கள் பல மதங்களை சார்ந்து ஜாதிகளை சார்ந்திருக்கிறார்கள். அனைவரின் நலனை பிரதிபலிப்பதுதான் தேசத்தை பிரதிபலிப்பதாகும். எனவே அந்த அக்கறையோடு பிரதிபலிக்கிற போக்கு கடந்த 9 ஆண்டு காலமாக இல்லை என்பது வரலாற்றில் ஏற்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய விபரீதமாகும். அந்த விபரீதம் இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதற்குரிய பல்வேறு காரணங்களை நான் விரித்து சொல்ல வேண்டும், ஆனால் நேரம் இல்லை. வழங்கப்படுகிற 2 நிமிடங்களில் இந்த 75 ஆண்டு கால அனுபவங்களை விரிவாக சொல்ல இயலாது. எனவே 2 விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்லி விடைபெற விரும்புகிறேன். முக்கியமான ஒரு விஷயம், இந்த 75 ஆண்டுகளில் திட்டமிட்டே ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பு தகர்க்கப்படுகிறது. ஜனநாயகத்தின் பெயரால் ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டு ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பை தகர்க்கிற போக்கு நீடிக்கிறது. இந்த போக்கு ஆபத்தானதாகும். அதே மாதிரி நாடாளுமன்ற முறையை படிக்கட்டுகளை மண்டியிட்டு வணங்குவதால் நாடாளுமன்றம் வளர்ந்து விடாது. நாடாளுமன்ற உள்ளடக்கத்தை காப்பாற்றுகிற ஆட்சியாக இந்த ஆட்சியாளர்கள் இல்லை. இவர்கள் நாட்டை நேசிக்கவில்லை, நாடாளுமன்ற முறைகளை நேசிக்கவில்லை, வெறும் தோற்றங்களை மட்டுமே வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே தேச நலனை பிரதிபலிக்கவில்லை, நாட்டு நலனையும் பிரதிபலிக்கவில்லை, நாடாளுமன்ற முறைகளையும் காப்பாற்றவில்லை, ஜனநாயக மரபுகளையும் காப்பாற்றவில்லை, அரசியல் சாசனத்தையும் காப்பாற்றவில்லை. எனவே இந்த ஆட்சி நீடிப்பது 75 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் விலை மதிப்பற்ற உயிர்கள் பலவற்றை கொடுத்து விடுதலை பெற்ற விடுதலையை இழக்க நேரிடும். G20 பற்றி பெரும் பாராட்டு சொன்னார்கள். அமெரிக்காவோடு என்ன ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கிறது? இஸ்ரேலோடு என்ன ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கிறது? ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களால் உலக அரங்கில் மதிப்புமிக்க ஒரு பிம்பம் இந்தியாவுக்கு உருவாயிற்று. அந்த பிம்பம் சிதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு இஸ்ரேலோடு கூட்டணி, யுஎஸ்இன் பட்டிகளில் கட்டப்பட்டுள்ள மாடுகள் மாதிரி இன்றைக்கு இந்தியா அவர்களுடைய கைக்கு சென்றிருக்கிறது. இவற்றிலிருந்து மீட்க வேண்டுமானால் இந்த ஆட்சி ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றாது, அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்றாது, நாடாளுமன்ற முறையை காப்பாற்றாது. எனவே இதற்கு விடிவு கொடுப்பதன் மூலம்தான் இந்தியாவை காப்பாற்ற முடியும், இந்திய அரசியலை காப்பாற்ற முடியும், ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற முடியும். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். ஸ்ரீ ஜெயதேவ் கல்லாஜி. Sir. You are in your seat. Okay. Yes. Thank you, sir. Sir, it is a momentous day in the history of our Parliament. It was a historic day that this House, which witnessed our freedom struggle, witnessed India's tryst with destiny, witnessed the creation of the Indian Constitution, and is now witnessing as we are bidding adieu to this great House, sir. As members of Parliament, we have dedicated ourselves to serving our beloved nation.
over the past 7 decades, as the Honourable Prime Minister has noted, more than 8,500 members have tirelessly served our Mother India within these hallowed halls. It's worth noting that many of these dedicated individuals hail from Andhra Pradesh as well. On this solemn occasion, I wish to pay my heartfelt respects and express my profound gratitude to each of them for their unwavering service. Sir, I'm here to serve my second term, extending my services to the people of my constituency, state and country. It would be remiss of me not to mention a towering figure in Indian politics, the great Gandhian, the legendary freedom fighter, Professor Acharya N.G. Ranga. He served as a member of the Central Legislative Assembly from 1930 onwards and as a member of the Indian Parliament since independence until 1991. Professor Ranga achieved the remarkable feat of 60 years of service in this House, starting with the Constituent Legislative Assembly in 1930, and 50 years as a parliamentarian, earning him a place in the Guinness Book of World Records. Many of you have seen his statue at Building Gate number 4 of this Parliament House. Sir, Professor Ranga was an inspiration to generations of politicians, including my own grandfather, Sri Paturi Rajgopal Naidu, a freedom fighter and 2-time Member of Parliament during the 6th and 7th Lok sabha. Another great leader from the state of Andhra Pradesh that I should mention here is Sri GMC Balayogi, who served as Speaker for the 11th and 12th Lok sabha and who was elected unanimously and served with distinction. I take this opportunity to pay my humble tributes to them and to all the other leaders from erstwhile and current state of Andhra Pradesh. Sir, I feel 7 decades' journey in the history of any nation is too short a period. But in this short period, we have shown the world what we are capable of. We have proved to the world, particularly the British, who wished India to become a failed state, that Bharat is second to none in every respect. We have proved and demonstrated to the world, the recent example being the G20 summit, that India's civilization, culture, philosophy, and more than anything else, the concept of Vasudhaiva Kutumbakam cannot be destroyed. We could achieve these in spite of being home to almost every single religion in the world, and also to a vast array of diverse cultures, languages, syncretic heritage with rich history of democracy and non-violence. Sir, today's occasion is not to score brownie points. Today's occasion, I feel, is to remember our achievements, successes, experiences, and where we have faltered, and address them through the current discussion. It is also our duty to express what lessons that we have learned from our past mistakes and give inputs for making this country great again. Sir, as Modi ji rightly says, that every government, every PM contributed towards the growth, progress and development of the country. The degree of pace, commitment and resolve might be different, but everyone contributed whatever they could for the sake of the country. So on this historic occasion, I remember all those great leaders, and I pay tributes on behalf of my Telugu Desam party and on my own behalf. But I would also like to highlight that it was during this period that the bifurcation of Andhra Pradesh was enacted. Sir, this Parliament, as the Honourable Prime Minister said in the morning, is a sacred institution, and whatever promise it makes will be sacrosanct. But the commitments made in the AP Reorganisation Act and on this floor are yet to be fulfilled, sir. Even the special category status, which was promised on the floor of this House, has not been implemented till date. I only pray that these sacred promises are implemented without any further delay. Sir, the new capital of Andhra Pradesh is in doldrums. Nobody knows what is the capital of Andhra Pradesh today. The farmers of Amaravati, who have been given more than 33,000 acres of land, are in a dharna for nearly 4 years. I wish and pray that Amaravati will remain as the sole capital of AP and that Government of India should intervene and do the needful in this regard. Sir, from 2014, under the leadership of Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, there have been many initiatives that have been introduced aimed at making India Atmanirbhar and positioning it as a global power. Of the many achievements over the past 9 years, I would rate financial inclusion through Jan Dhan Yojana as the most successful achievement, which helped inclusive growth and reduced corruption, which otherwise, as per Sri Rajiv Gandhi, only 15 paisa used to reach the beneficiary. Yes, Jaydev Gallaji. Sir, just give me Please. few more minutes, sir. There are some very important points I want to make. The second is Ujjwala Yojana, which helped 10 crore No, women. please.
escape from the cooking with firewood, coal, dung, cakes, etc., instead of using safe, clean, and environment-friendly LPG. So I'll skip to the end, sir. Sir, my party, the Telugu Desam Party, has played a pivotal role in this country's politics and growth. Both Sri NTR and Sri Chandrababu Naidu Garu played key roles in molding and shaping both the National Front and the United Front governments. Sir, you may recall that when Sri Vajpayee returned to power in 1999, after having lost the no-confidence motion, the TDP with 29 MPs in the Lok sabha was the strongest partner of the NDA. And during that government, many key reforms, such as banking sector reforms, telecommunication reforms, aviation reforms, the Golden Quadrilateral Project, the National Highway Development Project, and the promotion of information technology, which saw the establishment of technology parks and IT zones. All these reforms and projects were envisioned by Sri Chandrababu Naidu Garu and implemented by the central government, playing a key role in shaping India's economic growth. Sir, Dr. Kalam was also made president with the support of TDP and Sri Chandrababu Naidu Garu. Yes. Even in the recent past, the suggestions provided by him during the COVID pandemic helped our country to effectively fight it and come out resilient and stronger. And today we see that an unblemished, seasoned leader being arrested with political incarceration. It is a black day to democracy and the history of AP, sir. I wish to bring to the notice of the Honourable Prime Minister and the Honourable Home Minister how law is blatantly violated, cleverly twisted and maliciously to achieve political try to avoid all the by arresting Sri controversial Chandrababu issues, Garu. Sir, 2 minutes, I'll finish, sir. No. The main allegation in the case that 10% share of the state government, which comes to about 371 crores for the purpose of skill development, had been released to the project implementation companies and was swindled through shell companies. But the CID has been unable to establish that the money were entrusted to CBN or his family members. Sir, if 371 crore is siphoned, how 34 technical development? One second, Mithun Reddy, Sir, please. let me You just conclude, because sir. this is last day of the. See, this is the last day in this Parliament. Will you please conclude? This is the most important Without having issue, any controversial issues. sir. It's the most important issue, So the sir. spirit of today's discussion is not in not such a manner. Just conclude with the sentence, please. One second. Sir, all I wish to submit is that this kind of political vendetta, misuse of enforcement agencies, and political incarceration should be stopped in every state. And I appeal to the Honourable Prime Minister and Home Minister to direct the officials you can respond to it. to You can immediately respond to it. release Sri Chandrababu Naidu time. Garu. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, Sri PV Mithun Reddy. Sir, thank you, sir. Try to avoid the controversial issues, Sir, because it is not a controversy. I just want to put No, the just- facts straight. I just want to talk only on that, and I just want to put the facts straight. Sir, like what the Telugu Desam Party, Mr. Gallaji spoke, I just want to put the facts straight and what has happened in the Chandrababu Naidu case, sir. When Chandrababu Naidu was CM, a skill development program, which the government claimed that Siemens was part of it, and a tripartite agreement was made with a corporation for. no, why you have given them a 3,300 chance to say. No, I should. The government had to spend 10%. Hey, kuchara, matlana chala, kuchara. 3,300 crores was the project cost, and 10% was the share of the government, sir. In the GO, whatever was set in the GO was not carried out in the MOU, and without a rupee being paid, sir. Siemens vehemently they said that we are not a part of this. We are not a part of this, and we don't have anything to do with the 371 crores. Hey, kuchara. Wait. We have all the facts, whatever we have. Mithunji, you please. Mithunji, this is a matter. I will tell you, it is. No. I will tell you. Once you please be seated. Sir, I want to put it straight. You please be seated. I will 1 second. This is a matter which is pending before the court, and even the bail application is pending. In such a situation, we are having a deliberation on an issue which is being under the adjudication of the court, and that too the bail application is pending. Please try to avoid it. Sir, I want to put the facts. They have raised it. You said No. only told me that I can only raise he has it said again. about the political vendetta against. Yep. Hey, kuchara, no. You please don't go to the merits of the case. I will control the house. Sir, the income tax department has given a notice to Chandrababu Naidu's PA, and he has absconded from the country. They said, I can put it on the floor of the house, sir. It's a notice the income tax department has given, and in that 371 crores is what is this case, what we are talking. And ED, sir, they have got the trail of the money to various 80 shell companies. So even GST, sir, they have got all the fake invoices.
The case has been booked by the ED. All the agencies, which are central agencies, they have clearly found the trail of the money, sir. After a notice was given, Chandrababu Naidu's PF fled the country, sir. And one more person, now coming Manoj to was there, has fled the now, country. please, now come to the subject. Absolute case of corruption. That cannot and be. nobody, No, that cannot be it's allowed. Absolute case of corruption, No. sir. That cannot Sir, be allowed. All the fake GOs, Please. all the money has been think, and justice has to be done, sir. I just want to tell you one thing. All these years, please. he got away taking 18 stays, but finally law has caught up with him, and justice will be done, sir. No, let the court. Now let the court decide on the issues, Yes. please. Yes, You come to the subject. Sir. Ask them to shut up and sit down. You come to the subject matter. Finished. Okay, Mithun Reddy ji, you finished. Sir, you are talking something. No. Please come to the issue. Sir, so finally I want to conclude, sir. Let them not waste the time of the House by bringing false facts. As you said, it is sub judice. They should not raise this. Let the court decide. No scamster in the country says he is not guilty. Same is what the Telugudesam party is saying. Chandrababu is a scamster and So is guilty. please. Law Again, should you are prevail, sir. mentioning Thank the you. Yes, Venkatesh ji. To see all those contentious issues which are pending, that will be expunged from the records. You allowed me to discuss the Please. case, but you've allowed him to discuss the case. I didn't discuss the case. அவைத் தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். இந்த புகழ்மிக்க நாடாளுமன்றத்தின் 75வது ஆண்டு சிறப்பை நினைவு கூறுகிற இந்த தருணத்தில் இந்தியாவினுடைய வலிமைக்கும் செழுமைக்கும் காரணமாக இந்த அவையிலே பங்களிப்பு செலுத்திய அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன். அரசியல் சாசனத்தை நிறைவேற்றிய நமது முன்னோர்களினுடைய குரல் எதிரொலித்த ஒரு அவை இது. ஆங்கிலேயர்களிடமிருந்து அதிகாரத்தை கைமாற்றிய பொழுது விதியோடு ஒரு ஒப்பந்தம் செய்கிறோம் என்ற அந்த புகழ்மிக்க உரை நிகழ்த்தப்பட்ட அவை இது. இந்த அவையினுடைய மேன்மை இந்த கட்டிடத்தையோ இந்த கட்டிடக்கலையோ இந்த கட்டிட பொறியியல் சார்ந்ததல்ல. இந்த அவையினுடைய மேன்மை இந்த அவை எடுத்த முடிவுகள் சார்ந்தது. அந்த முடிவுகளை பின்பற்றப்பட்ட கோட்பாடுகளும் தத்துவமும் சார்ந்தது. இந்த அவைதான் மொழிவழி மாநிலங்களை உருவாக்கிய அவை. இந்த அவைதான் மன்னர் மானியத்தை ஒழித்தது. இந்த அவைதான் பொதுத்துறை எனும் நவீன கோவில்களை உருவாக்கியது. வங்கிகள் தேசியமயம், இன்சூரன்ஸ் தேசியமயத்தை உருவாக்கியது. ஏகபோகத்திற்கு கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது. உள்ளாட்சிக்கு கூடுதல் அதிகாரம், மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை திட்டம், தகவல் உரிமை சட்டம் என கொண்டு வந்தது. இந்த அத்தனைக்கும் பின்னால் அவைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் கம்யூனிஸ்டுகளினுடைய மகத்தான பங்களிப்பு இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த நாடாளுமன்றத்தின் வாசலில் ஒரு வாக்கியம் இருக்கிறது. ஒடுக்குமுறைக்கு ஆளாகி இருக்கிற யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் இந்தியாவை தனது இல்லமாக கருதலாம் என்று இந்த நாடாளுமன்றத்தின் வாசலிலே வாக்கியத்தை எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். எவ்வளவு உயர்ந்த சிந்தனை! இந்த தேசம் உலகத்திற்கு சொல்ல நினைக்கிற ஒரு சிந்தனை. இந்த சிந்தனையை உருவாக்கிய நம்முடைய முன்னோர்களினுடைய நினைவுகள் சூழ்ந்த ஒரு அவை இது. அரசியல் சாசனத்தினுடைய அமர்வுகள் 1083 நாட்கள் நடந்தது. அந்த விவாதங்களினுடைய நினைவுகள் சூழ்ந்திருக்கிற ஒரு அவை இது. அரசியல் சாசனத்தினுடைய குறிப்புகள் எழுதப்பட்ட ஏடுகளிலே கையெழுத்திட்டிருக்கிற நம்முடைய முன்னோர்கள் எல்லா மொழிகளிலும் கையெழுத்திட்டிருக்கிறார்கள். ஆங்கிலத்தில், உருதுவில், ஹிந்தியில், சமஸ்கிருதத்தில், தமிழிலும் கையெழுத்திட்டிருக்கிறார்கள். திரு மூசி வீரபாக அவர்கள் தமிழிலே கையெழுத்திட்டிருக்கிறார். நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால், பன்முகப்பட்ட இந்தியா, அனைத்து மொழிகளுக்குமான சமத்துவ இந்தியா தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் கண்ட கனவினுடைய அடிப்படை. எனவே தான் இந்த அவை அரசியல் சாசனத்தின் நினைவுகள் மட்டுமல்ல, விடுதலை போராட்டத்தினுடைய தழும்புகள் நிறைந்த ஒரு அவை. பகத்சிங் கர்ஜித்த எதிரொலி. இந்த அவை முழுவதும், இந்த அரங்கம் முழுவதும் விடுதலை போராட்டத்தினுடைய தலைவர்கள் அண்ணல் காந்தி, அம்பேத்கர், நேரு என்று அனைவருடைய சிலைகளும் உருவங்களும் நிறைந்திருக்கிற இந்த அவையை விட்டுவிட்டு நாம் ஒரு புதிய இடத்துக்கு செல்ல இருக்கின்றோம். அரசியல் சாசனத்தின் நினைவுகளை அகற்றிவிட்டு சாணக்கியனின் உருவம் படைத்த ஒரு இடத்தை நோக்கி இந்தியா கொண்டு செல்லப்படுகிறது என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் கவனப்படுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். சாணக்கியனுக்கும் ஜனநாயகத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம்? தனது முதல் பொது தேர்தலிலேயே
அனைவருக்கும் வாக்குரிமை கொடுத்த ஒரு அவை இந்த அவை. உலகத்தின் பல நாடுகள் நூற்றாண்டுகளாக கண்ட கனவை தனது முதல் தேர்தலிலேயே நிறைவேற்ற முடிவெடுத்த இந்த அவையிலிருந்து முடியாட்சியின் கொடூர தத்துவத்தை வார்த்தைகளால் வடித்த சாணக்கியனுக்கு முழு உருவ சிலை வைத்திருக்கிற ஒரு அவையை நோக்கி நாம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நண்பர்களே, இங்கே எல்லாம் விடுதலை போராட்டத்தின் நினைவுகள் என்றால் அந்த கட்டிடத்தில் எல்லாமே புராணங்களின் நினைவுகளாக இருக்கிறது, புராண படங்களாக இருக்கிறது. இந்தியா எங்கே செல்லுகிறது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி. இங்கே குறிப்பிட்டார்கள், படிக்கட்டை தொட்டு வணங்கிவிட்டு நாங்கள் உள்ளே வந்தோம் என்று. இருக்கலாம். ஆனால் இங்கே இருந்து வெளியே செல்லுகிற பொழுது நீங்கள் எதை விட்டு விட்டு செல்கிறீர்கள்? எத்தனையோ பிரதமர்கள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள், எதிர்க்கட்சிகளின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லி இருக்கிறார்கள், விவாதங்களிலே பங்கெடுத்திருக்கிறார்கள், காது கொடுத்து கேட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் எதிர்க்கட்சிகளினுடைய கேள்விக்கு ஒரு முறை கூட பதிலளிக்காத ஒருவர் என்ற நினைவைத்தான் இந்த அவையிலே விட்டுவிட்டு நீங்கள் செல்கிறீர்கள் என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த தேசம் பல பிரச்சனைகளை, இந்த தேசத்தின் பல பிரச்சனைகளுக்கு இந்த அவை முடிவு கட்டி இருக்கிறது கடந்த காலங்களில். ஆனால் சமீப காலத்தில் இந்த தேசத்தின் பல பிரச்சனைகள் இந்த அவையிலே இருந்து துவங்குகிறது என்ற வருத்தமும் வலியும் இங்கே சூழ்ந்திருக்கிறது. இந்த வலியை நீக்கி ஜனநாயகம் என்பது நாடாளுமன்றம் என்பது புதிய கட்டடம் அல்ல, அது பின்பற்றுகிற கோட்பாடும் அந்த ஜனநாயகத்துக்கு அளிக்கப்படுகிற மதிப்பிலும் தான் அதன் உயிர் இருக்கிறது. அந்த உயிரை நீங்கள் காப்பாற்றுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை அல்ல, 140 கோடி மக்களும் காப்பாற்றுவார்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு புதிய அரங்கை நோக்கி நாங்கள் அடியெடுத்து வைக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से मुझे सबसे पहली बार इस पवित्र और गौरवशाली सदन का सदस्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ और 17वीं लोकसभा में एक बार पुनः मैं यहाँ पहुंची। 9 वर्षों से ज़्यादा का समय यहाँ पर व्यतीत किया है और यादों का एक लंबा सिलसिला जुड़ गया है और अतीत की चंद यादें ऐसी होती हैं जिनसे कभी हमारा नाता नहीं टूटता। अध्यक्ष जी, आज इस पुराने संसद भवन में हम सभी साथियों का अंतिम दिन है और हम सभी के लिए ये भावुक कर देने वाला क्षण है। ये पुरानी संसद जो देश की नीति के मार्गदर्शन की एक शानदार विरासत संजोए हुए है, आज के बाद से ये इतिहास में दर्ज हो जाएगी और हम सभी कल एक नए आधुनिक सुविधाओं से लैस एक भव्य नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे। अध्यक्ष जी, भले ही इमारत बदल रही हो, लेकिन हम में से किसी का भी दायित्व बदलने वाला नहीं है। आज जो इस पुरानी संसद भवन में बैठकर हमने किया है, कल वही लोकतंत्र को मजबूत करने का दायित्व हमें नए संसद भवन में भी उसी उमंग और उत्साह के साथ निभाना है। इस अवसर पर संविधान सभा से लेकर अब तक 75 वर्षों की यात्रा में हमारी क्या उपलब्धियां रही, क्या स्मृतियां रही, क्या हमारे सबक लिए हमने, क्या अनुभव प्राप्त किए, इस विषय पर ये जो चर्चा आयोजित की गई है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि किसी भी लोकतंत्र के परिपक्व होने में 150 से 200 साल का समय लगता है, लेकिन भारत आज अपने लोकतंत्र के आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे देश का लोकतंत्र भी अपने शैशवावस्था में ही है, लेकिन इस शैशव काल में ही हमने ऐसी तमाम उपलब्धियां प्राप्त की हैं जो हमें गौरवान्वित करती हैं, हतप्रभ करती हैं। कई खट्टे मीठे अनुभव हैं, कई हमारे पास मूल्यवान स्मृतियां हैं और कई गहन सारयुक्त हमारे पास सबक भी हैं जो इतने वर्षों के लोकतंत्र की इस यात्रा में हमने प्राप्त किए हैं। अध्यक्ष जी, अगर मैं स्मृतियों की बात करूं तो हमारा यह पुराना संसद भवन ये अपने भीतर संजोए हुए है उन स्मृतियों को जब संविधान के निर्माण के लिए एक जीवंत बहस हुई। इसी संसद भवन के माध्यम से 1955 में अस्पृश्यता के खिलाफ कानून बना और 90 के दशक में मंडल कमीशन लागू हुआ। यहीं से जीएसटी का नया 1 नेशन 1 टैक्स का कानून आया। तो बहुत सारी ऐसी यादें
ये पुराना संसद भवन अपने अंदर संजोए हुए है। यदि उपलब्धियों की मैं बात करूं तो ये वो संसद भवन है जिसने देश को एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरते हुए भी देखा है, तो आज देश को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरते हुए भी देखा है। ये वो संसद भवन है जो भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देखने का भी साक्षी बना है और G20 के अध्यक्ष के रूप में कोविड-19 पैंडेमिक के उपरांत एक विभाजित दुनिया के बीच में भारत को एक यूनिफायर की भूमिका में उभरते हुए भी देखने का सौभाग्य इसी संसद को प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष जी, यदि मैं अनुभवों की बात करूं तो हमने 1962 के चीन से मिली हार का भी अनुभव प्राप्त किया है। इस पुराने संसद भवन ने देश पर 70 के दशक में जो आपातकाल थोपा गया उसको भी देखा है और इससे हमने कई महत्वपूर्ण सबक भी प्राप्त किए कि भारत को अपने सैन्य सामर्थ्य को बढ़ाने की जरूरत है और ये सबक भी प्राप्त किया कि भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि यदि उसे खत्म करने का कोई भी प्रयास किया गया तो वो भविष्य में घातक ही सिद्ध होगा। ऐसे महत्वपूर्ण सबक हमने प्राप्त किए हैं। अध्यक्ष जी, हमारे अनुभवों में यह भी रहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में सामाजिक न्याय की लगातार अनदेखी के कई उदाहरण हमने देखे। दशकों तक ओबीसी को यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में भागीदारी देने की अलग अलग रिपोर्ट्स जो आई समय समय पर, उनको जानबूझकर दबाकर रखा गया। 90 के दशक में मंडल कमीशन तो लागू हुआ, लेकिन उसकी सिफारिशों में जो अनेक खामियां रही उसको लंबे समय तक पूर्ववर्ती सरकारों के समय में दूर नहीं किया गया। आज वर्तमान समय में मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में देश के पिछड़े समुदाय के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनकी समय समय पर हमने चर्चा की है। अध्यक्ष जी, हमने ये भी अनुभव प्राप्त किया कि सामाजिक न्याय की राजनीति केवल शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में भागीदारी प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, अपितु इसका दायरा हमें सामाजिक और आर्थिक समानता लाने की ओर भी ले जाने तक प्रयास करने की दरकार है। और इस दिशा में बाबा साहेब अम्बेडकर का जो स्वप्न था कि देश में सही मायनों में लोकतंत्र पूरा तब होगा जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो और इस असमानता को दूर करने के प्रयास सरकारों द्वारा किए जाएं, और उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाएं लाके समाज के सबसे निचले और वंचित तबके को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का भी काम किया है और इस सामाजिक असमानता को दूर करने के प्रयास किए हैं। कल ही अध्यक्ष जी, देश को एक अभूतपूर्व सौगात मिली प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में, और इस योजना के माध्यम से देश का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाला जो शिल्पकार है, जो कारीगर है, जो बढ़ई है, दर्जी है, नाई है, नाव बनाने वाला है, मछली का जाल बनाने वाला है, लोहार है, सुनार है, ऐसे तमाम जो निचले तबके पे हमारे हाथ और औजार से काम करने वाले शिल्पकार और कारीगर होते हैं, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आने जा रहा है। अध्यक्ष जी, सामाजिक न्याय की पहुंच, सामाजिक न्याय का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि न्याय की पहुंच अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक होनी चाहिए, और हमने ये अनुभव प्राप्त किया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी संविधान दिवस के दिन देश को अपनी चिंता से अवगत कराया था कि आज भी न्याय की पहुंच की जो रफ्तार है वंचित तबकों तक, वो बहुत धीमी है और इस रफ्तार को हमें तेज करने की दरकार है। न्याय की सुलभता समाज के दबे कुचले तबकों तक हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए अभी हमें बहुत प्रयास करने हैं। हमारी न्यायपालिका में सामाजिक विविधता हो, यानी समाज का जो दबा कुचला वर्ग है वो भी न्यायपालिकाओं में स्थान पाए, इस दिशा में भी कार्य करने की दरकार है। और ये सब चिंताएं तब दूर होंगी, ये सब प्रयास तब हमारे और मजबूत होंगे जब हम सब मिलकर उस तंत्र को मजबूत करने का प्रयास करेंगे जिसके माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि मजबूत से मजबूत माने जाने वाला संविधान फेल हो सकता है और कमजोर से कमजोर समझा जाने वाला संविधान सफल हो सकता है यदि
इसको लागू करने वाला तंत्र मजबूत हो। और कहीं ना कहीं उस तंत्र को अभी हम उतना सुदृढ़ नहीं कर पाए हैं, इसीलिए ओबीसी के लिए बैकलॉग वैकेंसीज को फिलअप करने की जो समस्या है वो लंबे समय तक बनी रही। न्यायपालिकाओं में हम सामाजिक विविधता को लाने के प्रयास जिस हद तक हमें करने चाहिए उस हद तक इतने वर्षों में हम नहीं कर पाए। तो आज के इस दिन पर हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम इस तंत्र को निरंतर मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में मैं कहना चाहती हूं कि यही समय है, सही समय है कि हम सब मिलकर अपने संविधान निर्माताओं और देश की आजादी के लिए मरने मिटने वालों की मंशा के अनुरूप संविधान को जो मजबूती से इस देश के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचा सके, उस मंशा के अनुरूप हमें इस तंत्र को मजबूत करना है। हम सब एक नई उमंग, नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ इस पुराने संसद भवन की यादों को अपने दिल में रखते हुए कल नए संसद भवन में प्रवेश करें, लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करें। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर, इस यादगार लम्हे पर मैं इस पुराने संसद भवन को सादर प्रणाम करना चाहती हूं, जिसने मुझे इतना कुछ सीखने का अवसर दिया है और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने का एक मुझे सौभाग्य यहां से प्राप्त हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ए राजा जी। सर, प्लीज टेक केयर ऑफ द टाइम। 5 minutes. Thank you very much for the opportunity that has been offered to me. Sir, this day is a very important and glorious, remarkable day in history. Sir, putting centuries in the capsule is the method to weigh the events of history, which was adopted by the various history researchers, those who are having researchers in the various fields. Sir, I think that today, 75 years freedom that has been put into a capsule, and the capsule is being viewed in various prospects. It is not a qualitative analysis or quantitative analysis. It is an analysis which will help us how this country can be put in the bigger orbit in the future. Sir, I will take only few minutes. Sir, today I was astonished, surprised, shocked by hearing the speeches of Prime Minister Honorable Modi ji. Why I am shocked? Why I am surprised? The reason is, I will not say that today there is a drama of Jekyll and Hyde, but something contradictory between the attitude and speeches delivered in this house. What is it? Please. Why? Sir, just जी, उनकी बात तो होने दीजिए। Sir. जी, नहीं, प्लीज आप नहीं, प्लीज, कोई चीज रिकॉर्ड में भी नहीं जा रही है। प्लीज आप बोलिए। नो, आप बैठ जाइए। नो, कुछ चीज ना रिकॉर्ड में जा रही है, अनुचित है, बोलने दीजिए। interpretation, what can I do? आप प्लीज बोलिए। Sir, I salute Modi ji. I used to salute Modi ji when he assumed office in 2014. When he delivered his speech on the day of independence, 2014, what he said, I may permitted to read, I quote, "Brothers and sisters, today, if we have reached here after independence, it is because of the contribution of all the prime ministers, all the governments, and even the governments of all states. I want to express my feeling of respect and gratitude to all those previous governments and ex-prime ministers who have endeavored to take our present-day India to such heights and who have added to the country's glory," unquote. Now, having elapsed 10 years, having occupied 10 years in the chair, in this year, everybody knows, not as a prime minister, I think that partly political statement was made on the Red Fort that we will fight against nepotism, corruption and appeasement.
Sir, I deeply regret the words which were uttered by the Prime Minister are not matching the stature of the Prime Minister's post, with due respect. This is not a political meeting. Now, why we are going back 75 years of independence? Just I want to quote a few sentences. What happened in the Constitution Assembly? Sir, by quoting the two documents of the Prime Minister's speech, I think that I can draw an inference, even I can draw conclusions that the Prime Minister's attitude and the government's attitude, Treasury bench's attitude in this House throughout 10 years is not little bit, completely diabolic in nature. Sir, for past 10 years what has been done in the country? Constitutional morality is distorted, democratic governance is disrupted, social harmony is under threat, political heritage defined and determined by our forefathers has been mocked. I will come out one by one. Sir, I want to keep my eyesight towards the events of the Constitution Assembly, and I will come to the three categories of appeasement and nepotism and corruption if time permits. Otherwise, I will stop appeasement itself. Sir, this House has witnessed so many events to denigrate Nehru and other leaders that they did appeasement to minorities. Out of the appeasement, the country is suffering today. Nobody can accept, nobody can deny. Sir, DMK was having problem with Congress. We did so many agitation for language, as against Hindi, for state autonomy and federalism. Even to save democracy, we were put into jail by the Congress government. That is altogether different. Our fight with the Congress is always genuine. Tata Sky box is not receiving signal. In case it is cloudy or raining outside, please wait till the weather clears. If the problem persists, please power off your Tata Sky box and check that all wires to your box are firmly connected. Post this, select the proper AV mode on your TV and then power on your box. Your Tata Sky box is not receiving signal. In case it is cloudy or raining outside, please wait till the weather clears. If the problem persists, please power off your Tata Sky box and check that all wires to your box are firmly connected. Post this, select the proper AV mode on your TV and then power on your box. Your Tata Sky box is not receiving signal. In case it is cloudy or raining outside, please wait till the weather clears. If the problem persists, please power off your Tata Sky box and check that all wires to your box are firmly connected. Post this, select the proper AV mode on your TV and then power on your box. Your Tata Sky box is not receiving signal. In case it is cloudy or raining outside, please wait till the weather clears.